Good morning, dear students. How are you all? I hope you are good and healthy at home, dear students. Yes, dear student, we are studying our chapter number 9, and chapter number 9 is problem of excess and deficient demand. So, yesterday we have completed deficient demand. What is deficient demand? When the aggregate demand is less than aggregate supply, that is deficient demand. And what are the measurement? It means how we can identify deficient demand in diagrammatic form. Yesterday we have completed this thing also. Then after we have completed causes of deficient demand, it means what factors are responsible to create deficient demand in the economy. We have already completed yesterday this point. And beta, then after, what are the impact of deficient demand, or you can say what are the consequence of deficient demand in the economy में deficient demand का क्या impact होता है, वो भी हमने कल complete कर लिया था. It means all the points related to deficient demand such as deflationary gap, meaning, causes, consequence, everything we have completed. And beta, totally this is your 6 mark question as I told you earlier. So now today we are here to discuss about second problem, that is problem of excess demand. It means it is just opposite to the deficient demand, and it is also 6 mark question for the purpose of CBSE examination as well as their home exam also. Okay, dear students, so now proceed for the topic. Here is, yes, here is your second problem, that is problem of excess demand. Yes, dear student, it is just opposite to the deficient demand. In deficient demand, aggregate demand is short as compared to aggregate supply. It means the condition was AD is less than AS. AD less than AS means deficient demand. Demand is short, but here demand is excess. It means the condition is AD is greater than AS. AD is greater than AS corresponding to full employment level. It means same thing was also repeat in deficient demand. If we are measuring this situation excess, whether we are measuring excess or we are measuring deficient, both are available at full employment level. Okay, full employment means every person who is willing to work, efficient to work, getting work. जो काम करने के लायक भी है, काम करना चाहता है, उसे काम मिला हुआ है, दैट इज द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. Okay, so now here is the meaning. Yes, excess demand means excess of AD. It means a condition when AD is greater than AS. जितना हम सप्लाई कर सकते थे, सपोज we can supply in our economy is 100 units. Okay, but people are demanding for 120 units. So is it possible in the economy? If we are giving our 100%, अगर हम अपना 100% दे चुके हैं, दे रहे हैं, then after can we increase the level of production? So dear student, the answer is no, we can't. Okay, so now move to the next point, and the next point is, yes, measurement of excess demand. It means how you will find excess demand in diagram. Okay, so yesterday we have completed deficient demand in the diagram. Today the turn for excess demand. So look at here, dear student, in this diagram simple thing is given. It means on the axis, on x-axis we are taking income or GDP, and on the y-axis you can take AD, aggregate demand. AS usually 45-degree line. Okay, because y equals to AS, this is 45-degree line. Okay, so now first of all, ADF means when there is a full employment, AD is standing at this point. This is the point. Okay, but we are showing excess demand. ADP means planned AD, or AD you can write it ADE. E stand for excess. Okay, yes dear students. Okay, so now any line above the full equilibrium shows the excess demand. Any line या any AD line above the excess showing the excess demand. Okay, look at here again. Yes, here is the point. This is the equilibrium point when the condition is full
full employment. But when excess demand, then the condition is here. Okay, so it means the gap between E and F is showing the excess demand. Yesterday, any point below the full employment, that is deficit demand, or any point above the full employment showing the excess demand. Okay, I hope you understood that point. Yes, dear students, so now move to the next point, and the next point is causes of AD. Yesterday we have completed causes of deficient demand. Today we are going to start causes of excess demand. So first of all, just clear two things in your mind. First, कि what includes in AD. AD में क्या include होता है. Yes, dear student, if you are watching videos daily and doing your work regularly, so you must know AD in two sector economy, AD equals to C plus I. It means only household and investor. But this is your closed economy. But if we are talking about the open economy, so C plus I plus G plus net export, it means X minus M. X minus M will be there. X minus M will be there, plus G plus X minus M. Okay, dear student, clear? So in the deficient demand, demand from every sector start decreasing. हर सेक्टर से डिमांड कम हो गई थी, सो ओवरऑल डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड भी इकोनॉमी में कम हो गई. बट अगर हम इसका अपोजिट लें, इफ़ द डिमांड फ्रॉम एवरी सेक्टर स्टार्ट इंक्रीजिंग, अगर हर सेक्टर की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए, सो इकोनॉमी में क्या होगा, द कंडीशन विल बी एक्सेस डिमांड. तो सिंपल, दिस इज द आंसर दैट यस. इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अगर हम सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, सो देयर आर टू थिंग्स ओनली, हाउस होल्ड एंड इन्वेस्टर. सो अगर हाउस होल्ड अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है और प्रोड्यूसर भी अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, देन डेफिनेटली एडी विल इंक्रीज. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, तो इन टू सेक्टर के साथ गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है, एक्सपोर्ट्स, इट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डिमांडिंग फॉर इंडियन गुड्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी डिमांड बढ़ रही है, and imports are decreasing, that Indians are not using imported goods, okay, foreign goods, and tax rate is also decreasing. Tax rate, yesterday we talk about the tax rate कि tax plays a very important role on our real income. अगर टैक्स का रेट ज़्यादा होता है तो हमारी ज़्यादा इनकम टैक्स में चली जाती है, बचती कम है तो हमारी डिमांड भी कम हो जाती है. बट हेयर इफ टैक्स रेट इज रिड्यूस, अगर टैक्स का रेट कम हो गया डियर स्टूडेंट, देन द रियल इनकम इन एवरीबडी, रियल इनकम ऑफ एवरीबडी विल इंक्रीज. सबकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी. इफ़ इनकम इज इंक्रीजिंग, नाउ वी कैन स्पेंड मोर मनी देन अर्लियर, पहले से ज़्यादा हम पैसा खर्च कर पाएंगे. सो ओवरऑल डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो नाउ हैव ए लुक अगेन. प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज. Second, investment expenditure also increasing, government expenditure is also increasing, exports, it means the rest of the world also demanding for Indian goods, imports are decreasing. Okay, it means Indians are using only domestically produced goods, and tax rate also and finally tax rate is reduces, so it increases the real income so that we can buy more goods. Okay, it means we can demand for more goods. So these are the simple reason that every sector if demanding more, then aggregate demand will increase. Okay, dear student, so now move to the next point. Next is consequences of excess demand. It means suppose there is a condition of excess demand in the economy, then what will happen or what will be shown in the economy. क्या दिखेगा हम इकोनॉमी में, कैसे पता लगाएंगे. So here are the condition. Yes, dear student, the first is, yesterday we studies about deficit demand. So here we studied that deflationary gap will be there, but now in excess demand inflationary gap will be there. Inflationary gap means that the pressure of demand on existing resource, people are demanding for more goods. अब कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी. एज कॉस्ट इंक्रीज, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, और आउटपुट तो सेम है. इट मीन्स पीपल आर पेइंग मोर अमाउंट फॉर द सेम कॉमोडिटी. सो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होगा, इन्फ्लेशनरी गैप होगा, और इन्फ्लेशनरी गैप मीन्स इट इज इक्वल्स टू एक्सेस डिमांड. ओके, सो any AD above the full employment AD, any line above the full employment AD is showing the excess demand, or it is equals to inflationary gap. It means economy में inflationary gap होगा. Second,
Static GDP, it means no change in GDP, no change in employment, even नो चेंज इन नेशनल इनकम, किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज वी आर डूइंग आर 100%, हम सप्लाई 100% कर रहे हैं. सो देन आफ्टर इफ वी आर यूजिंग 100% वंस, सो सपोज वी आर नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, हम एक एक्स्ट्रा यूनिट नहीं बना सकते हैं. सो हेयर स्टैटिक जीडीपी मीन्स नो चेंज इन जीडीपी. और जब जीडीपी चेंज नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट भी चेंज नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं है तो इनकम भी चेंज नहीं होगी. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, excess demand and wage price spiral. As I told you in the inflationary spiral, it means when the cost of every output will increase. अगर cost increase होगी so economy में सेल प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कोस्ट ज़्यादा है, सो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड शो होगी. लॉस ऑफ प्रॉफिट, इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर आर नॉट fulfilling the demand of people. There is a loss of unfulfillment of demand. इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं. इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ लॉस. अगर स्टॉक बचा हुआ है तो भी लॉस है. इट इज़ हैपन इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. और अगर हम लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं बेटा, सो इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ लॉस. तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो देयर. ओके डियर स्टूडेंट, सो here is the points, all are the points. So what we have discussed today related to excess demand. First of all, meaning it is a situation when AD is greater than AS. Then after we have completed the measurement in diagrammatic form, that any line above the AD full employment showing the excess demand. Then after there are the causes. Causes means from if demand from every sector is increases, it shows the excess demand. Then after beta consequence, in consequence we have study inflationary gap will be there, and static GDP means no change in GDP, no change in income. Okay, when no change in GDP, no change in income, but supply demand is continuously increasing, so हमेशा price increase होंगे. That is excess demand and price wage price spiral. Loss of profit because of unfulfillment of demand in the economy, showing the loss of profit. And today's last question is, actually we have completed both the point, deflationary as well as inflationary. So what are the difference between inflationary or deflationary gap? Many of you can answer if you are listening everything. Yes dear student, here's the point. Yes, inflationary gap, it is a excess of AD over the above इट्स लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर कोई भी लाइन है एडी की, इट इज शोइंग द एक्सेस डिमांड. और सेम इट इज़ द डिफ्लेशनरी डिफिशियंसी ऑफ एडी फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे जो भी लाइन होगी, इट इज शोइंग द deficient AD, deflationary gap. It occurs when AD is greater than AS corresponding to full employment, or it occurs when AD is less than AS corresponding to full level of employment. Level of output is constant at full employment. यहाँ level of output constant होगा. Level of output is less than, because people are demanding less, तो supply भी क्या हो रही है, less हो रही है. There is no अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बिकॉज हम अपना 100% दे ही रहे हैं, तो इकोनॉमी में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. बट इन दिस केस एडी इज लेस, लोग कम डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस कर रहा है. अब कम प्रोड्यूस करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी इकोनॉमी में, और अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगी. इट लीड्स टू वेज प्राइस स्पाइरल. इट मीन्स हर चीज़ के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज एडी इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी. और इसमें लो प्राइस हैं बिकॉज पीपल आर नॉट डिमांडिंग. प्रोड्यूसर के पास बहुत एक्स्ट्रा सामान बचा हुआ है, और एक्स्ट्रा सामान को सेल करने के लिए वो प्राइस को डिक्रीज करेगा. सो हियर आर द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप. सो माय डियर स्टूडेंट, study regularly, do your work regularly, and beta please call for the doubts if you are not able to do any question, not able to understand any point. So please call anytime, don't hesitate. Okay, so stay blessed, stay safe at home.